हेलो एंड वेलकम टू ज्यूरिसर्च यूट्यूब चैनल। तो अगर आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एलएलएम एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, then you must be knowing that environment law is one of your crucial subject, especially the conventions part, right? तो मैंने इस वीडियो में कुछ कन्वेंशन डिस्कस की हैं, दैट टू इन अ वेरी क्रक्स मैनर, राइट, एंड विच इज़ वेरी much useful for your objective type questions. Hence, stay connected with the video to know the important conventions. So, see, firstly, let's understand कि हर एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है। देखिए, बहुत ढेर सारे कॉन्फ्रेंसेस कन्वेंशन दिए गए हैं आपके इन्वायरमेंट लॉ में। सारी चीज़ें याद करना टुगेदर विद देयर थीम्स, टुगेदर विद देयर ईयर्स is like next to impossible thing, right? And it's not that much required also, so why to overburden ourselves? तो देखिए, अगर मैं स्पेसिफिकली यूजीसी नेट की बात करूं, राइट, तो वहाँ पे आपसे ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी इम्पोर्टेंट कन्वेंशंस है, जितने फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, आज तक पूछे गए हैं, उसके बेसिकली ये लोग थीम्स पूछते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपसे ईयर पूछ लेंगे, राइट, या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, राइट, दिस इज व्हाट दे डू आस्क। और अगर मैं एलएलएम एंट्रेंस की बात करूँ तो ऑलमोस्ट यही इनका पैटर्न होता है, थीम, ईयर, एंड दे माइट आस्क टू यू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, राइट। तो हमें यही दो तीन चीज़ों का ध्यान देना है, राइट। सो टू स्टार्ट विथ रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स 1971, राइट। तो देखिए, पहले हम लोग जान लेते हैं कि वेटलैंड्स होते क्या हैं। तो वेटलैंड्स आर बेसिकली द एरियाज वेयर वाटर कवर्स द सॉइल, राइट। तो बेसिकली ये ऐसे एरिया होते हैं जहाँ मिट्टी के आसपास लाइक द सॉइल इज सराउंडेड बाय द वाटर, right? And since it is being surrounded by the water throughout the year, यहाँ पे बहुत ज़्यादा moisture होने की वजह से it is a home to aquatic plants and insects. Now, why it is important to conserve these areas? Because of the moisture present, right? They are helpful in absorbing pollutants. They do help in improving the water quality. They do reduce their soil erosion, and of course, it is helpful for the agriculture. Right? So that is why to conserve these areas, Ramsar Convention on Wetlands, it was introduced in year 1971. अब आइए जानते हैं कि ये कहाँ अडॉप्ट किया गया था। ये अडॉप्ट किया गया था रामसर में ही, राइट, एज द नेम सजेस्ट, और ये एक ईरानियन सिटी है, एंड it was adopted in year 1971, but it came into force in 1975. राइट। लास्टली एक और अपडेट मैं ज़रूर देना चाहूँगी कि 2022 में, विच वाज लास्ट ईयर, इंडिया ने नए वेटलैंड्स ऐड किए हैं अपने रामसर साइट्स पे, राइट, एंड द नंबर ऑफ वेटलैंड्स इज 11, राइट, लाइक हीराकुड रिजर्वॉयर इज देयर एंड सुपा लेक इज देयर, राइट। दिस माइट बी आस्क्ड, okay, so this is the thing which you could remember with respect to Ramsar Convention 1971. Now, next convention is Biodiversity Convention. ये कब आया था आपका? 1992 में आया था, ठीक है। तो ऑफ कोर्स ये बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए ये कन्वेंशन लाया गया था। अब बायोडाइवर्सिटी होती क्या है? So biodiversity is all different kinds of life you will find in one area, right? जैसे कि you will find the variety of animals, plants, fungi, and even microorganism at in one area, right? That is what we call it as biodiversity. अब इस कन्वेंशन का गोल क्या क्या था, राइट, मैंने आपके स्क्रीन पे भी मेंशन किया है। सो इट हैज गॉट 3 goals. First is the conservation of biological diversity. Second is the sustainable use of the components of biodiversity. Third is the fair and equitable sharing of benefits arising from the genetic resources. राइट, क्या इंडिया इस बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन का पार्टी है? हाँ है। इसने इंडिया ने रैटिफाई किया था इन ईयर 1994, एंड of course India has also got its separate legislation which is known as Biological Diversity Act 2002, right, just to give effect the provisions of the convention. So ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। यूजुअली आपसे ऑफ कोर्स थीम पूछी जाएगी, ईयर पूछा जाएगा, right? So this is the information. Now, next important conference is Stockholm Conference, right? तो इसका formal name है
UN Conference on the Human Environment. And this is the first declaration of international protection of the environment. Right, so it was the first world conference to make the environment a major issue. Right, it was the first declaration. तो ये आप ध्यान रखिए. और स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें तो इसी में ही आपके 26 प्रिंसिपल्स दिए गए हैं. वो प्रिंसिपल्स भी कभी कभी स्पेसिफिकली पूछ लेते हैं, जैसे लास्ट ईयर भी पूछा था इन्होंने 2022 में. राइट, सो इट्स बेटर दैट यू शुड ऑल्सो गो थ्रू दोज प्रिंसिपल्स एट वंस. राइट, and those principles are called as Magna Carta on Human Environment. Right, so this is the thing that you should remember. So you might be aware that NTA has declared June 2023 UGC NET attempt dates, right? Just to restore its cycle, and there is a strong possibility that we are going to witness total 3 attempts for UGC NET exam. Right, so considering all these things, Juris Search Academy has actually opened up its enrollment for UGC NET Batch 2023, जिसमें कि आपको लाइव लेक्चर्स मिलेगा फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2. स्टडी मटेरियल है फॉर सेपरेट फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2. 10 मॉक्स है फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 विच इज बेस्ड ऑन द रीसेंट ईयर पैटर्न. एंड आपको यहाँ पे अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा फॉर द रिकॉर्डेड वर्जन ऑफ लाइव क्लासेस एंड मोर. राइट, और आपको कोई इन्फॉर्मेशन जाननी है तो प्लीज डू कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर विच इज गिवन अंडर द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यू कैन ऑल्सो विजिट द लिंक which I have dropped in the description box just to know more about this course. Now next is your Kyoto Protocol of 1997. अब इसका थीम क्या है? To reduce greenhouse gas emission. अब ये ग्रीन हाउस गैस क्या होता है, और ये कभी कभी पूछ भी लेता है कि what do you understand by ग्रीन हाउस गैस. सो बेसिकली देखिए, जो ग्रीन हाउस गैस है, दिस इज बेसिकली अ गैसेस कंपाउंड इन द एटमॉस्फेयर and it is capable of absorbing infrared radiation या trapping the heat in the atmosphere. Right, तो atmosphere में ये जो gases present होते हैं, they are actually capable of holding the heat, जिसकी वजह से these are responsible for the greenhouse effect and which unfortunately leads to the global warming. Right, इनकी वजह से of course atmosphere में heat बढ़ जाता है. So इसको भी control करने की काफ़ी ज़रूरत है. तो ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है, दे बेसिकली अप्लाइज टू 6 टाइप्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस. यहाँ पे मैंने लिखा भी है कौन कौन से वो 6 गैसेस है, एक बार आप लोग देख भी लीजिएगा. सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्योटो प्रोटोकॉल. नाउ लास्ट वन इज योर बॉर्न कन्वेंशन ऑफ 1979. इसका फॉर्मल नेम है कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. तो जैसा कि आप देख सकते हैं, नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि इसकी थीम क्या होगी. So basically, it protects the endangered migratory species of wild animals and their habitats. ये एक लौता global treaty है which concerns with the migratory species and it does work under UNEP. अब इसका main contribution अगर हम लोग देख ले तो इसमें 2 appendix added हैं. Appendix 1 में जिसमें कि list of migratory species दी गई हैं which are endangered in nature, and Appendix 2 में list of other species दी गई है. So this is sufficient to remember for Bonn Convention. Thank you for watching this video and do not forget to subscribe Juris Search channel to get the further updates.